Hello everyone, welcome to today's video. Today we are going to cover the topic of cryptography and the related concepts to cryptography. See, cryptography is very important in cybersecurity because whatever data which is being transferred over the network, that is encrypted and then it is transmitted and at the receiver side it gets decrypted. मतलब जो भी डेटा हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं आजकल बहुत सारे ऐप्स पे, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, बहुत सारे ऐप्स हम लोग यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशंस। तो ये सारे एप्लीकेशंस क्या कर रहे हैं, जो डेटा हमारा ट्रांसमिट कर रहे हैं वो वैसे का वैसा ट्रांसमिट नहीं कर रहे, उसको किसी अनरीडेबल फॉर्मेट में चेंज करके फिर सेंड कर रहे हैं, जो कि फिर रिसीवर के पास जाके उसका डिक्रिप्शन होगा। लास्ट टाइम वीडियो में हमने जो अटैक्स देखे थे उसमें एक अटैक था मैन इन द मिडल अटैक। बीच में कोई भी हमारा मैसेज पढ़ के उसका कोई भी मिसयूज कर सकता है। तो ऐसे टाइप के अटैक्स अवॉइड करने के लिए या कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन हमारा डेटा ना रीड कर सके, इसके लिए क्रिप्टोग्राफी कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस सी व्हाट इज दिस क्रिप्टोग्राफी, encryption, decryption, and how it works. So in this video today we are going to see what is the concept of cryptography, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ये जो दो है वो क्रिप्टोग्राफी के टाइप्स है, सिमेट्रिक की एंड असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। then what is the difference in between these two concepts and various examples of cryptography. Now, before we start the actual concept of cryptography, these are some words that will be repeated in the video. The first word is plain text. प्लेन टेक्स्ट मतलब नॉर्मल जो हमारा टेक्स्ट हम लोग टाइप कर रहे हैं या बोल रहे हैं, जो यूजर्स को, सारे यूजर्स को रीडेबल फॉर्मेट में मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन टेक्स्ट। दैट मीन्स नाउ आई एम टॉकिंग विथ यू इन इंग्लिश, आई एम यूजिंग हिंदी इन बिटवीन। तो ये जो है, जो लैंग्वेज में यूज कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ और आप लोगों के समझ में आ रहा है, दैट टाइप ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड एज प्लेन टेक्स्ट। मतलब जो डेटा हमारा यूजर रीडेबल फॉर्मेट में है उसको क्या बोलेंगे, प्लेन टेक्स्ट। जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है जो हमें ट्रांसमिट करना है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, दैट टेक्स्ट, दैट डेटा इज कॉल्ड एज प्लेन टेक्स्ट। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट मतलब अभी मैं जो बोल रही हूँ इसको किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया मैंने, जिसकी वजह से वो किसी को भी समझ में ना आए, सिर्फ मुझे और कोई जो मेरा इंटेंडेड रिसीवर है उसको ही समझ में आए। तो जो मेरा एनकोडेड डेटा है जो अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा उसको बोलेंगे साइफर टेक्स्ट। ओके, देन द थर्ड कंसेप्ट इज की। मतलब जो लॉक हम लोग यूज करेंगे टेक्स्ट को लॉक करने के लिए या एनकोड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज की। ओके, plain text means original text, original data. Cipher text means encoded or encrypted text, and key is the lock or code word that is being used for either encryption or decryption. Now what is this encryption or decryption? क्या है encryption? क्या है encryption? एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे plain text को cipher text में कन्वर्ट करेगा। ओके, मतलब अभी मैं जो बोल रही हूँ उसको किसी ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जो कि किसी को भी समझ में ना आए, सिर्फ उसको समझ में आए जिसके पास मेरी सीक्रेट की है, प्राइवेट की है, जिसकी वजह से वो डिक्रिप्शन कर सके। ओके, उसका सिंपल एग्जांपल है, देखो कभी कभी हम कोई ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ए बी सी डी को सी डी ई एफ करके लिखा है, मतलब ए को रिप्लेस किया है सी से, बी को रिप्लेस किया है डी से, ऐसा एक एल्गोरिदम दिया होता है। तो ए बी सी डी एक ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, डी ई एफ जी ऐसे कुछ लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सामने वाले अगर उसको पढ़ेगा तो मे बी समझ में ना आए, नहीं आता है उसको। तो ऐसी जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एनक्रिप्शन, की हमारा जो ओरिजिनल डेटा है उसको किसी अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। That process is called as encryption, converting the plain text into cipher text. This process is called as encryption. In this image, you can see hello is the word.
इट इज रिटन इन सम कोडेड लैंग्वेज बाय यूजिंग द एनक्रिप्शन टेक्निक। और इसके लिए जो की यूज होती है उसको हम बोलेंगे एनक्रिप्शन की। एक तो वो सीक्रेट की हो सकती है एनक्रिप्शन के लिए इन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, और इन असिमेट्रिक की इट इज डिफरेंट। So encryption is the process of converting plain text into ciphertext. It is performed by using an algorithm and a key, and it protects the sensitive information during transmission. क्यों protect कैसे करेगी ये? क्योंकि अगर मैंने जो डेटा हमारा है वो ऐसे के ऐसे ट्रांसमिट हो गया, तो बीच में कोई भी उसको अगर कैप्चर करता है तो वो इजीली उसको इंटरप्रेट कर पाएगा, रीड कर पाएगा, या उसका मिसयूज भी कर सकता है। तो इसीलिए सारे जो एप्लीकेशन है वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन दे रहे हैं, ई टू ई एनक्रिप्शन क्यों दे रहे हैं, एंड टू एंड एनक्रिप्शन, सो दैट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर जब डेटा जा रहा है या वाइस वर्सा रिसीवर से आ रहा है, दोनों तरफ से जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर ये प्लेन टेक्स्ट में है तो इजीली इट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय एनीबॉडी, it can be read and misused by anybody. So to avoid that the encryption technique is used. Plain text को encrypt कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, cipher text. This diagram is very simple and easy to understand. Original message उसको लॉक कर दो और हमें जो मिलेगा टेक्स्ट उसको बोलेंगे cipher text. Next is decryption. Now this is the reverse process. Encryption की क्या प्रोसेस है, जो हमारा ओरिजिनल डेटा है उसको एनकोड कर दिया और हमें मिला साइफर टेक्स्ट, वो हो गया एनक्रिप्शन प्रोसेस। अभी डिक्रिप्शन क्या करेगा, जो हमारे रिसीवर के पास जो एनकोडेड डेटा पहुंचा है विच इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट, तो उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में लाने की जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे डिक्रिप्शन। ओके, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट बैक टू द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज डिक्रिप्शन। इसके लिए भी हमें सीक्रेट की जरूरत पड़ेगी जो सेंडर के पास थी, और इसकी वजह से क्या होगा, इट एंश्योर्स द ऑथराइज्ड यूजर्स कैन रीड द डेटा। मतलब किसी भी अनऑथराइज्ड यूजर के पास डेटा पहुंचता है और अगर उसके पास जो डिक्रिप्शन की है वो नहीं है, then that person will not be able to read the data. Okay, that is the main concept in this cryptography, or we can say encryption and decryption. Got it? Very simple diagram, ciphertext, decryption, and we get the plain text. Now, exactly what is this cryptography? We have seen the concept of encryption, decryption separately. Now, cryptography is the method of protecting information by converting into a secret code. Just now we have studied it. Then it protects the data from unauthorized access, and it ensures confidentiality, integrity, and authentication. Confidentiality means sharing the data only with authorized users, authorized parties. That is called as confidentiality. Integrity means avoiding the unauthorized changes, modification to the data, that is called as integrity. And authentication means only the authentic users, authorized users, they should get the access of the data, that is called as process of authentication. In the previous video we have studied these concepts. If you have not seen yet, you can go back and see that video and then see this particular video. Okay, so because of cryptography the confidentiality is maintained. That means suppose on WhatsApp we are messaging somebody, so that message will remain confidential between me and that particular person, the sender and the receiver. Even nowadays they are saying that WhatsApp cannot read your messages. So this is the power of cryptography. When the message is encoded, it goes from sender to receiver in such a format, in between nobody can read that message. Then now this is the cryptography process. You can see just now I told you there is a sender and there is a receiver. So when the message is typed by the sender, by some encryption technique, it gets converted into some unreadable format, unreadable code. There can be different types of algorithms which are used for encryption, so that the data will get converted into such a format that nobody else will read it, means able to read it. It is not impossible. If hackers are there, they really try to intercept such data and try to read such data. They do such things, but conceptually if you see, this thing is hard to break. Like if the data is encrypted, nobody else apart from the authorized user, जो हमारा सेंडर है और ऑथराइज्ड ऑथेंटिक यूजर रिसीवर है, वही वो डेटा को रीड कर पाएगा. ओवर द नेटवर्क डेटा इज गेटिंग ट्रांसमिटेड इन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ साइफर टेक्स्ट. मतलब नेटवर्क में जो भी डेटा हमारा जा रहा है
फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, अगर क्रिप्टोग्राफी का प्रोसेस यूज करते हैं, then that data goes in the ciphertext form. It does not go in the form of plain text, because you know that if plain text is there, anybody can read. So see the diagram, and same diagram can be used when you're writing answers sender to receiver. You just show a message being encrypted into a ciphertext over the network. It is getting transmitted. तो रिसीवर के पास डेटा जाएगा, वो जो होगा वो साइफर टेक्स्ट में होगा, और जो रिसीवर है उसको डिक्रिप्ट करेगा, फिर उसको वो इजीली रीड कर पाएगा. तो सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर द ऑथराइज्ड पार्टीज. एनी वन इन बिटवीन कैन नॉट रीड द मैसेज, or even if they get the message, they will not be able to interpret what is written in the message, because it is in the encoded format, or you can say encrypted format. Okay, so now there are two types of cryptography techniques. One is called as symmetric key cryptography, and the second one is asymmetric key cryptography. Symmetric and asymmetric. Symmetric, it is also called as secret key cryptography or private key cryptography. Two other names are there. So what happens here? Here only one key is used for encryption and decryption. मतलब सपोज हमारे पास पीडीएफ आजकल आते हैं, देखो लॉक पीडीएफ्स. पीडीएफ को एक पासवर्ड दिया रहता है, तो इफ आई एम सेंडिंग अ लॉक पीडीएफ, आई विल गिव दैट पासवर्ड टू अनदर पर्सन टू whom आई वांट टू सेंड दैट पीडीएफ. तो अगर उसके पास वो पासवर्ड है तो ही वो पीडीएफ को ओपन कर पाएगा. सेम पासवर्ड वी आर यूजिंग फॉर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग द मैसेज. Okay, so this concept is called as the symmetric key cryptography. Same key is used for encryption as well as decryption. So there is a plain text, it is encrypted, then it goes to, it becomes the ciphertext. When we encrypt the data, plain text becomes ciphertext. And at the receiver side, again the same key is used for decryption, so that ciphertext gets converted into plain text. Simple diagram: plain text, encrypt, ciphertext, decrypt, and you get the plain text. So only one key, you can see in the diagram, only one key is used for locking and unlocking the message. Any type of data which you want to encrypt or decrypt, the same key is used, which is called as secret key. And this secret key is shared between sender and the receiver. Means you have to share this key. You cannot keep it secret to yourself, because if you keep it secret, how that other person is going to decrypt the data, right? So you have to share the password, that particular password of PDF you are sharing, for example. That means the same key is used for locking and same key is used for unlocking. Simple real-time example: if you are locking your door with one key, to unlock that door you will need the same key. With different another key you cannot do that, no? So this is called a symmetric, means same key, same, is used for encryption and decryption. The second type is asymmetric key cryptography. As the name suggests, asymmetric means different. So there are two keys used here. One key is called as public key and one key is called as private key. यहाँ पे दो keys use होने वाले हैं. Previous slide में we have seen symmetric, there was only one key. उसमें एक ही key था जिसको हम बोलेंगे secret key. But यहाँ पे दो keys है, एक है public key and second is private key. So what is the use of public key? Public key सबको पता है, जो भी वो communication के parts है, जो भी लोग उस communication में participate करने वाले हैं, all those people will know the public key, कि सबको पता है कि ये public key है. Okay, and private key will be only with the receiver, कि receiver के पास वो private key होगी, वो सबको बता देगा कि मेरा जो data है वो आपको ये public key use करके encrypt करना है और मुझे भेजना है. Okay, तो अगर ये डेटा किसी और को मिल भी जाता है तो वो लोगों के पास सीक्रेट की तो है नहीं, वो तो मेरे पास है प्राइवेट की. तो दैट डेटा विल बी अनलॉक्ड बाय मी ओनली, that will be decrypted by me only, because I have the private key. Okay, so this is the concept of asymmetric key cryptography. एक तो हमारा plain text है, जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसको एनक्रिप्ट किस की से करेंगे? पब्लिक की, विच इज नोन टू एवरीवन इन द कम्युनिकेशन. जो भी उस कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे सबके पास हमारी पब्लिक की है. गॉट इट? सो encryption can be done by anybody, whoever is there in the communication. Then that data which is encrypted, it is called as ciphertext. उसको convert कर दिया ciphertext में और उसको transmit कर दिया over the network. तो वो data जब authorized user के पास पहुंचेगा in the encrypted format,
that data will be decrypted only by using the private key, which is with the receiver only. Nobody else is knowing what is the private key. And then data will be decrypted to the plain text, means original format में data मिल जाएगा और receiver उसको read कर पाएगा. तो यहाँ पे दो keys हैं, you have to remember this. One is called as public key, which is used for encryption. Private key is used for decryption. Public key is with everybody. Private key is only with the intended receiver, not with other receivers. Okay, and here there is no need to share private key. यहाँ पे you have to only share public key. जो भी है वो सबको बता दो कि डेटा कैसे एनक्रिप्ट करना है, बट डिक्रिप्ट कैसे करना है डेटा को वो किसी और को नहीं पता है. सिर्फ वो जो रिसीवर है जिसके पास वो प्राइवेट की है वही वो डेटा को डिक्रिप्ट कर पाएगा. So this is called as asymmetric key cryptography. How it works now, let us see. There are one sender and one receiver. Alice is the sender and Bob is the receiver. These are the names which are used here. So Alice writes the message. Okay, उसने कुछ message लिखा या type किया. तो this message will be encrypted. अगर उसको Bob को message भेजना है तो this message will be encrypted by using Bob's public key. Bob ने जैसे बोला है उस हिसाब से उसको encrypt करना पड़ेगा. So encrypted with Bob's public key, sent over the network. The ciphertext which is in encrypted format that will be sent over the network. तो पब्लिक की से हमने क्या किया, उसको एनक्रिप्ट किया. अभी जब वो डेटा साइफर टेक्स्ट जब बॉब के पास पहुंचेगा तो बॉब डिक्रिप्ट्स द डेटा विथ इट्स ओन प्राइवेट की. उसकी जो खुद की प्राइवेट की है उससे वो अनलॉक करेगा डेटा या डिक्रिप्ट करेगा एंड उसको वो मैसेज जो एलिस ने लिखा था वो मिल जाएगा. तो क्या हो रहा है, एलिस ने मैसेज लिखा, उसको बॉब की पब्लिक की से एनक्रिप्ट करना है. उसकी एलिस की इसमें ना पब्लिक की है ना प्राइवेट की, कुछ भी नहीं है. जो भी है पब्लिक प्राइवेट की वो थी बॉब की. तो बॉब ने बोला कि अगर तुम्हें मुझे डेटा भेजना है तो यू एनक्रिप्ट द डेटा बाय यूजिंग माय पब्लिक की एंड सेंड टू मी, आई विल सी व्हाट टू डू विद इट. तो उसके पास अपनी खुद की प्राइवेट की थी, उससे उसने डेटा को डिक्रिप्ट कर दिया और वॉट एवर मैसेज वॉज गिवन बाय एलिस इट रेड बाय द बॉब एट द रिसीवर साइड. सो एलिस कौन है, हमारा सेंडर है, और बॉब कौन है, रिसीवर है. एलिस डेटा एनक्रिप्ट कर रहा है, बॉब के पास जो डेटा आ रहा है वो डिक्रिप्ट कर रहा है. एलिस यूज कर रहा है पब्लिक की, बॉब की जो एनक्रिप्शन के लिए यूज होगी, और बॉब यूज करेगा अपनी खुद की प्राइवेट की, तो डेटा डिक्रिप्ट हो जाएगा. Got it? So this basic diagram you can use to show how the asymmetric key cryptography works. Here you can see two different keys, yellow and red. One is the public key, one is the private key. This type of keys you can show in your diagram with the pencil or pen. You can just highlight the different types of keys you can draw to show that difference between the public key and private key. So once you know the diagram, you can easily write the answer. Only you remember पब्लिक की प्राइवेट की जो भी है वो रिसीवर की होगी, उसमें सेंडर की कोई भी पब्लिक प्राइवेट की कुछ भी नहीं है. देन नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन दोनों में क्या डिफरेंस है. अभी हमने देखा बट स्टिल दिस इज द टेबुलर फॉर्मेट which is easy to understand. So symmetric key, how many keys are there? There is only one key. In symmetric key cryptography there is only one key. In asymmetric key there are two keys. One is called as public key and one is called as private key. दो keys है, एक public है एक private है. So here same key is used for encryption and decryption, no doubt in that, क्योंकि हमारे पास एक ही की थी. यहाँ पे public key encrypts and private key decrypts. Public key use होती है encryption के लिए, private key use होती है decryption के लिए. स्पीड देखा जाए तो दिस इज फास्टर बिकॉज एक ही की यूज करने फटाक से वही हो जाएगा, स्पीड इंक्रीज इसका. तो दिस इज फास्टर एंड एज कंपेयर टू दिस लिटिल बिट स्लोअर बिकॉज इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्लो है. This is less secure because same key you have to share with the sender receiver, they both are sharing the keys, so there is less security. But here there is more security because there is no need to share your private key. If you are a receiver, you are not going to share your private key at all. It will remain with you only. And that is why this many applications they are using this asymmetric key cryptography only. WhatsApp, Telegram, you take many names, they are using end-to-end encryption, and mainly by using this asymmetric key cryptography. Then
Key sharing is there, must share the same key. There is a risk of exposure, मतलब वो किसी और को भी पता चल सकती है. If you are sharing something, then it cannot be 100% trustworthy. That can be the problem of exposure. So here you are not sharing anything, so it is safer. This key is private, so this particular technique, asymmetric key cryptography, is safer as compared to symmetric key. Then when there is large data encryption like PDF, zip files, at that time you can use the symmetric key cryptography. But when you are using digital signatures, secure socket layer, HTTP, secure protocol, emails, WhatsApp, these types of applications where a lot of communication is happening over the network, there they are using asymmetric key cryptography as it is more secure. Then there are examples AES, DES, RC4, these are the examples. RSA and ECC, these are the examples of asymmetric key cryptography. Real life examples I told you already. PDF passwords, same passwords to open and lock the PDF file. And asymmetric bank locker means there is one locker number that is public, but you can open that lock by using your own private key only. So this is asymmetric key cryptography. So the difference between symmetric key and asymmetric key, once you understand how they work, you can easily write the difference between these two. Then, so thank you for watching this video. If you have any queries related to cryptography concepts or symmetric or symmetric key cryptography, you can comment below the video and share with all your friends who are studying this particular subject, cybersecurity. It will be helpful to them. Thank you so much. Thank you for watching. God bless you all. Thank you.